So we have seen the routes of administration. Okay? We have seen the general pharmacology route of administration. You might know what do you mean by drug. Drug का definition आपको मालूम होगा. So sources of drug भी आपको मालूम होंगे. So drug is anything that will. Drug is a chemical which is okay. Drug is a chemical which is used to diagnose, to treat, to mitigate disease. That is a drug. Or as per WHO definition, drug is any compound which will alter a physiological change, which is used for the diagnosis, treatment, and mitigation of disease. That is a drug. And what are the sources of drug? Source क्या होता है drug का? तो drug में भी drug का source में भी it may be either natural source. Natural source में आएगा आपका दो टाइप. Natural में आता है plant source and animal source. Plant से कौन सी drug आएंगे? जितने भी alkaloids है. So alkaloids from plants. Source of drug in that natural in that from plant origin alkaloids like atropine, D2-berberine, morphine, codeine, thipine. Lot of alkaloids are there. That is alkaloid. Now animal source. From animal, what you are getting? From animal, from animal you are getting various type of hormones like anti-reproductive hormone, plasma, antibodies like that. Okay? From animal hormones are. From humans antibodies are taken. So natural में तीन आएगा आपका plant, animals and humans. Natural में आता है आपका inorganic. When inorganic salt जैसे calcium आता है calcium carbonate, sodium carbonate, sodium bicarbonate. Again aluminum hydroxide gel, magnesium trisilicate. So all these drugs come from the inorganic origin. Now second one is nothing but the synthetic drug. Third one is semi-synthetic. Semi-synthetic मतलब क्या? जो naturally आपके पास है उसको ही modify करो. That is semi-synthetic. For example, atropine के derivative. So all these are the semi-synthetic. Like the atropine monohydrate, mononitrate, और atropine उसके बाद में बहुत सारे. So that is semi-synthetic. Now third source is nothing but the synthetic, which are totally जो synthetic आता है. Most of the drugs whatever now we are using, all these are the synthetic drugs. Now again microbial source. Natural में microbial भी आएगा आपका. So from the microbial source we are getting a lot of antibiotics and all that. That is the one of them. So sources of drug आपको वो अपने पढ़ा हुआ सेमेस्टर के एग्जाम के लिए. That is not important for GPAT. Okay? That's why I am not taking this. We have seen up to this. When you are giving a drug or when you are taking a drug particular condition. So suppose that you are taking a tablet. Tablet will go into stomach. It will disintegrate. It will dissolve it. It will release the drug. So drug in a dosage form. So it will be released. It will be released in the GIT. So it will go in the solution. GIT fluid में ये mix होगा. That is a drug in a solution. It will be absorbed into systemic circulation in the blood. It will be absorbed into blood. Now this process is known as the absorption of drug. Movement of drug from the site of administration to the systemic circulation. That process is known as the absorption process. जहाँ से ड्रग दिया है आपने ओरली टैबलेट लिया है तो स्टमक में से जब ब्लड में जाएगा ड्रग तो उसको बोलेंगे एब्सॉर्प्शन. सो क्रॉसिंग ऑफ ल्यूमिनल मेम्ब्रेन that is known as absorption. So movement across the luminal membrane of drug from the GIT fluid to the blood known as the absorption. In the blood, after the absorption of drug in the blood, so drug may be either in a free form में रहेगा. It will not form any complex with the protein. It will not form any bond with the protein. So in the free form. So if it is in a free form, so it is available for mechanism of action. It will go at the site of action. It will go to the site of action. And it will show its action. Okay. It can also be get stored in the tissue or it will be metabolized. It will be metabolized. Now, if your drug is not in a free form in the blood, if after the absorption of drug, your drug is not in a free form in the blood, so it is bound to proteins. अगर आपका ड्रग एब्सॉर्प्शन होने के बाद में प्रोटीन को बाउंड करता है सो प्रोटीन बाउंड ड्रग इज नॉट अवेलेबल फॉर मेटाबॉलिज्म. सो जो प्रोटीन बाउंड ड्रग है उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकता. प्रोटीन बाउंड ड्रग है वो एक्शन भी नहीं दे सकता आपको. जो प्रोटीन बाउंड ड्रग है वो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं हो सकता. सो प्रोटीन बाउंड ड्रग इज नॉट अवेलेबल फॉर द मेटाबॉलिज्म डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन. नाउ प्रोटीन बाउंड ऑफ ड्रग प्रोटीन बाउंड ड्रग इज नॉट अवेलेबल फॉर एनी एक्शन. मतलब वो एक्शन भी नहीं दिखाएगा, वो मेटाबॉलिज्म भी नहीं होगा, उसका एक्सक्रीशन भी नहीं.
आफ्टर ओके फ्री अगर है फ्री ड्रग है आपके बॉडी में, so if your drug after absorption remains free in the blood, it will go at the site of action, okay, and at the site of action also you should be free, then only it will show pharmacological action, or it will bind to some tissue either in a free form or it may be in a bound form. Now if free drug is there, it will be metabolized, metabolism होगा उसका, उसमें changes होंगे, and metabolism of drug inside the body is known as a biotransformation. Biotransformation मतलब क्या? Bio मतलब क्या है? Living system, bio, and transformation मतलब क्या? Alteration or change. So alteration of drug inside the body, alteration of drug inside the body, alteration of drug inside the body, or changes of drug inside the body, that is known as a metabolism, or biotransformation or detoxification. It's same, all these terms are the same: biotransformation, metabolism, detoxification, all these terms are same. Now drug may be metabolized and excreted. Drug may be metabolized to form its metabolites, and it is excreted in the urine, bile, feces, saliva, sweat, etc. Now if drug is a pro drug, अगर आपका drug pro drug है तो वो मेटाबोलाइज होके एक्टिव ड्रग बनेगा, ठीक है, और ड्रग में भी excreted from the body unchanged, ये ड्रग unchanged भी excrete हो सकता है बॉडी में. So major route of excretion are nothing but the urine, bile, feces and sweat and saliva. तो most of the drug जो है वो यूरिन में ही excrete होते थे. Most of the drugs they are excreted in the urine. Lipid soluble drugs they are excreted in the bile. Unabsorbed drug which is excreted in the feces. Water soluble drugs they are excreted in the urine and sweat. Let's say alcohol. Alcohol is also excreted in the urine as well as sweat. Saliva में भी कुछ drug excrete होते थे. Mostly antibiotics. So antibiotic लेने के बाद में आपका मुंह कड़वा पड़ता है. क्यों? Because the antibiotic is excreted in the saliva. Now after the administration of drug will go into the blood known as absorption, and it will be distributed in the different body compartments. So either drug will remain in the blood, or it may go into the site of action, or it may go into the different tissue. So that process is known as a distribution or storage. So movement of drug from the site of administration to the systemic circulation known as absorption, and distribution of drug in the blood via blood to various tissue and various compartment known as distribution, and after that metabolism is there and excretion is there. So removal of drug is known as excretion. Removal of drug from your body known as excretion, right? So this is just overview of your what happens to the drug, what body does with the drug. Okay, what body does with the drug. We have seen in the very first kinetics. What do you mean by kinetics? ADME, absorption, distribution, metabolism and elimination. So this is known as a ADME, kinetics, pharmacokinetics, kinetics. Now, movement of drug within a body known as kinetics. Okay, or what body does with the drug is nothing but the kinetics: absorption, distribution, metabolism and elimination. Right. Now, out of that we are going to see absorption process. Now, drug is absorbed from the site of administration to the it will cross drug from the site of administration to the blood. It can cross, it has to cross the semi permeable membrane. तो अगर ड्रग ले लिया अपने स्टमक में गया, वहां से उसको ब्लड में जाने के लिए जो स्टमक का वॉल है या फिर इंटेस्टाइन का वॉल है, it has to cross, so it has to cross the semi permeable membrane. Now what are the different processes of absorption? Now, absorption takes place in a different process, so that again depends on the physical chemical properties of drug. First one is nothing but the passive. Okay, first one is nothing but the process is nothing but the simple अगर बोलेंगे आप तो diffusion. First one is the diffusion. Okay, simple diffusion. Huh? So before that your membrane, say okay, your GIT membrane is nothing but it is made of phospholipid. So आपका जो membrane है, that is a phospholipid bilayer. At the extracellular side there is a polar, okay, there is a polar heads. Inside there is a non-polar tails. Non-polar tails से ये polar heads. ये outside the cell extracellular, ये inside the cell. This one is a phospholipid bilayer. So your membrane is a phospholipid bilayer, right? Now we will see the first process known as the passive diffusion. Passive diffusion. Now you have to remember it is also known as ionic diffusion. Also known as ionic diffusion, and that is nothing but the movement of drug along with the concentration gradient or electrochemical gradient. That is from a high concentration or a high concentration to the low concentration.
known as the concentration gradient or electrical gradient, and that is the driving force for movement of drug. क्या होता है आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इट इज अ वॉल ऑफ जीआईटी। ये क्या है आपका, ये पूरा इंटेस्टाइन है, इट इज इंटेस्टाइन, इट इज अ वॉल ऑफ इंटेस्टाइन और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। नाउ आपने ड्रग ले लिया, सो इन द इंटेस्टाइनल ल्यूमेन you have a high concentration of drug. The intestinal lumen you have a high concentration of drug, and in the blood you have low concentration of drug. Blood में drug है ही नहीं, अपने आप ही clear. So there is a movement of drug from high concentration to the low concentration. There is a movement of drug from high concentration to low concentration, and that is known as a diffusion. This process is known as diffusion. It is known as a passive diffusion. So movement of drug from high concentration to the low concentration, that is known as passive diffusion. That occurs due to the difference in the concentration at the both side. देखो ये साइड पे क्या है, concentration ज़्यादा है, ये साइड पे concentration है ही नहीं उसका, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, ठीक है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। So there exists a concentration gradient. यहाँ पे क्या है, concentration gradient across the membrane, and that is a driving force for the movement of drug from higher concentration to the lower concentration, and known as a passive, also known as a non-ionic diffusion. What is meant by इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट? मीन तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट समझ दिए आपको। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट मतलब क्या है? सपोज दैट एट वन साइड ऑफ योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वन साइड ऑफ योर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज, देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज, बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज है, एंड यहाँ पे कुछ नहीं है। सो देयर एग्जिस्ट इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, एक साइड पे चार्ज है, एक साइड पे चार्ज नहीं है। जिस चार्ज वेयर देयर इज ओके, सो दैट विल मूव, this charge will move from higher charge to lower charge. That is known as a electrochemical gradient. Electrochemical movement of drug from higher concentration to lower concentration. That is known as a, that there is, if there is a difference in the concentration of drug to the both individual sides, there is just a concentration gradient. If there is a difference in the charges, positive charge or negative charge, okay? At the both side of your membrane, there exists a electrochemical gradient. There is a movement of molecule from high concentration to low concentration, or there is a movement of molecule from higher charge to lower charge. This is known as a passive diffusion, and this process is known as a downhill process. या क्या बोलेंगे इसको, डाउनहिल, क्योंकि ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन में ड्रग ऑटोमेटिकली मूव हो रहा है। दैट इज नोन एज डाउनहिल प्रोसेस, downhill. Okay, so remember passive diffusion is also known as ionic diffusion, movement of drug along with the concentration gradient or electrochemical gradient, okay, which is the driving force for movement of drug. Now second point we'll see, as it is question आ चुका है, 90% of drug they are absorbed by passive diffusion. 90% of drugs they are absorbed by passive diffusion. Question आ चुका है, 90% of drugs they are absorbed by passive diffusion, and diffusion, the rate of movement of, or the movement of drug, or rate of movement of drug is given by fixed law of diffusion. तो क्वेश्चन आया था GPAT 2018 में, 90% of drug they are absorbed by passive diffusion process. क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पे आपको याद है। I will see the next point. Okay, now in this process there is no energy requirement. यहाँ पे कोई एनर्जी लग नहीं रहा है, so that's why it is known as a passive. जहाँ पे एक्टिव है वहाँ पे एनर्जी लग जाएगा. So process is energy independent and it is a non-saturable. सैचुरेट नहीं होता। आप बोलेंगे सर कैसे सैचुरेबल नहीं, बोल तो इट इज अ नॉन सैचुरेबल, यहाँ पे लिखा है। अभी नॉन सैचुरेबल क्यों है? यहाँ पे क्या है आपका ब्लड है, ब्लड, ये सब क्या है, ब्लड कंपार्टमेंट है, ये क्या है, इंटेस्टिनल ल्यूमेन है, यहाँ पे ये ड्रग्स ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है। मान लीजिए यहाँ पे 90, यहाँ पे 100% ड्रग है, यहाँ पे 0% है। सपोज ऑब्वियसली यहाँ पे डिफ्यूजन होगा, इधर से इधर जाएगा। सपोज दोनों साइड पे क्या होगा, 50-50% ड्रग आ गया, इधर भी अभी 50% है, इधर भी अभी 50% है, क्या होगा, देयर इज नो मूवमेंट ऑफ ड्रग। तो दोनों साइड पे अगर 50-50% हो गया, देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ ड्रग, बट दिस विल नॉट हैपन, ये होता ही नहीं। अगर दोनों साइड पे अगर 50-50% ड्रग हो गया, तो वहाँ पे वो उसको बोलेंगे स्टैग्नेंट कंडीशन, सैचुरेशन, ठीक है। बट ये होता नहीं, क्यों नहीं होता, बिकॉज यहाँ पे जो है ये क्या है, ब्लड कितना है 6 लीटर्स, वो क्या है कंटिन्यूसली मूविंग है। So that's why whatever drug is absorbed from whatever movement of drug is there from higher concentration to lower concentration,
rapidly diluted through a blood. यहाँ पे blood होने का ये है rapidly dilute करता है, and that's why the concentration of drug in the GIT is always higher. The concentration of drug in the GIT is always higher than concentration of drug in the blood, and this condition is known as sync condition. आपको बाद में आ जाएगा. Okay, so post process energy independent. There is a non-saturated molecular weight having 100 to 400 electron. So drugs which are having molecular weight 100 to 400 electron, they are absorbed by passive diffusion. Concentration of drug in the GIT is always maintained high than concentration of drug in the blood. Concentration of drug in the GIT is always maintained high than concentration of drug in the blood. Because of the blood rapid dilution, this is also a driving force for movement, and this condition is always maintained because of the circulation of blood. This is known as a sync condition. This condition is known as a sync condition. So concentration of drug in GIT is always maintained higher than concentration of drug in the blood, and this is also a driving force for movement of drug, and how the maintenance of higher concentration at the GIT than blood is known as a sync condition. So it is always maintained because यहाँ पे जो blood यहाँ पे जो drug molecule आएंगे, they will be rapidly distributed by blood through various tissues, through various organs. That's why sync condition. Okay, what do you mean by uphill? What do you mean by downhill? Okay, मैंने जो बोला है, suppose आपको ये साइकिल चला रहे हो आप, वैसे तो आप ये साइकिल कोई चलाता नहीं, लेकिन आप चल रहे हो और आपको चढ़ना है ऊपर, चढ़ना है. So it will take lot of energy. It will take lot of energy. Now suppose वो आप ऊपर चढ़ के हो गए, आप सामने क्या है, स्लोप है, आपको नीचे आना है. It will not require कि आप बैठे सिर्फ साइकिल पे एक दो पेडल मारो, ऑटोमेटिकली साइकिल नीचे जाएगा कि वहाँ पे स्लोप है, यहाँ पे चढ़ाव है, यहाँ पे उतर है. This process is known as uphill, and this process is known as downhill. Now how uphill and how downhill? So movement of drug from lower concentration to higher concentration. Movement of drug from lower concentration to higher concentration is known as a uphill process, and movement of drug higher concentration to the lower concentration is known as a downhill process. ये हो गया uphill, ये हो गया downhill. ठीक है, it is very easy. ये terminologies रहती है. Now, second transport mechanism or second absorption mechanism is pore transport. It is also known as convective transport or bulk flow or filtration. याद रखो, also known as a convective transport, bulk flow or filtration. This mechanism is responsible for the absorption of water soluble molecules through a protein channel present on the cell membrane. Water soluble molecules, they are absorbed by pore. Now hydrostatic pressure is the driving force due to difference in the hydrostatic pressure across the cell membrane. एक साइड पे ज्यादा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, एक साइड पे कम है, so that's why there is a movement of through a protein channel known as a pore transport. पोर मतलब क्या? पोर मतलब छेद होता है, छेद. वैसे वो जो है ना, हम तुम्हें इतने छेद कर देंगे. So drug having molecular weight less than 100 Dalton and low molecular size drug, they are absorbed by water soluble drugs like urea, water, sugar. ये molecules, urea is not a drug, water is not a drug, sugar is not a drug, but these molecules has a very less molecular weight, and they are transport or they are absorbed by pore transport. We have protein channel present in the cell membrane, right? So you can see over here, this is your cell membrane. Cell membrane है, ये extra cellular से यहाँ से ये क्या है, protein channel है, ये protein channel है. So movement of drug through this protein channel, low molecular weight drug, is a pore transport. So urea, water, sugar, they are absorbed by pore transport. Linear molecule up to 400 daltons. तो normally 100 dalton का molecule अगर है, so molecule weight having 100 dalton, they are absorbed by pore transport. But sometimes linear molecule up to 400 dalton, it can be absorbed by pore transport. इसके ऊपर GPAT 2021 में क्वेश्चन आया है. What was the question? This was the question. So what is the size of aqueous filled pores? As it is question पूछा है GPAT 2021 में. आलू मटर भिंडी याद रखो. So what is the size of aqueous filled pores? अगर पानी इसमें भर गया तो इसका साइज क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा है. Size of aqueous filled 4 to 10 angstrom unit. 4 to 10 angstrom unit. ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है GPAT 21 में. Now third transport mechanism or the third absorption mechanism is ion pair transport. Ion
पेयर ट्रांसपोर्ट। तो पेयरिंग होता है, आप जो भी पेयर बनाते हो ना कॉलेज में, नहीं यार मैं उसके साथ ही प्रैक्टिकल करूँगा, वो मेरे को बहुत अच्छी लगती है, तो उसके साथ में ही प्रैक्टिकल करूँगा। आयन पेयर ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे भी दो आयन होते हैं, एक आयन कौन है आपका ड्रग है, दूसरा आयन कौन है एक बॉडी का आयन है। तो एक दोनों में क्या होता है आफर चलो होता है, फिर वो दोनों साथ में ही रहते हैं, साथ में बातें करते हैं, साथ में ही चले जाते हैं पार्क में घूमने के लिए, और वो वहाँ का एक आयन है उसको छोड़ के आता है वहां से वो भाग गया। वैसे आयन पेयर ट्रांसपोर्ट कैसा होता है देखो। ड्रग्स एंड कंपाउंड्स, ड्रग्स एंड कंपाउंड लाइक quaternary ammonium sulfonic acids, such compounds despite of their low partition coefficient values, these drugs can transport or can penetrate the membrane by forming a reversible natural complexes with endogenous ions of GIT and other bodies like mucin, and the phenomenon is known as a ion pair transport। आयन पेयर ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि आपका एक ड्रग है, कि आपका जो ड्रग है, आपका जो ड्रग है वो पॉजिटिवली चार्ज, आपके जीआईटी में एक प्रोटीन है, आपकी जीआईटी में एक प्रोटीन है वो नेगेटिवली चार्ज, तो ये दोनों में क्या होता है फिर आप फिर चलो ये इसको बाइंड कर देता है, और ये दोनों क्या करते हैं फिर दोनों साथ में बाइंड होते हैं, और वो मेम्ब्रेन के पार चले जाते हैं, और फिर वहां जाके अलग अलग हो जाते हैं, और ये दूसरा रिटर्न आ जाता है फिर छोड़ दिया उसको। So drugs and compound like quaternary ammonium sulfonic acid, despite of their low partition coefficient values, such drugs they can penetrate the cell membrane by forming a reversible complexes with the naturally endogenous ions of GIT like mucin. The phenomenon is known as a ion pair transport. And the drugs example of drug is nothing but the propranolol. Propranolol is a basic drug and it forms an ion pair with the oleic acid of your cell membrane. तो ये प्रोप्रानोल क्या है, इट इज अ ड्रग यूज्ड इन द हाइपरटेंशन। प्रोप्रानोल इट इज अ बीटा ब्लॉकर, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। ये बेसिक ड्रग होता है, ये क्या करता है अफेयर कर लेता है किसके साथ में, ओलिक एसिड के साथ में। ओलिक एसिड इसमें क्या है, ओलिक एसिड मतलब ये फैटी एसिड है, इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, तो प्रोप्रानोल पॉजिटिव चार्ज, ओलिक एसिड नेगेटिव चार्ज, तो चलो एक में के साथ में बाइंड हो जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करते हैं, और ओलिक एसिड क्या करता है फिर प्रोप्रानोल को छोड़ देता है, ठीक है, बेवफा हो जाता है वो प्रोप्रानोल का आप है दूसरे साइड पे। प्रोप्रानोल इज अ बेसिक ड्रग दैट फॉर्म्स अ आयन पेयर विद द ओलिक एसिड एंड इट इज एब्सॉर्ब्ड बाय दिस मैकेनिज्म। एग्जांपल है तो नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ एब्सॉर्प्शन इज नथिंग बट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, यहाँ पे क्या है फैसिलिटेशन हो रहा है, फोर्स कर रहे हैं, कोई होता है ना दोस्त जब पार्टी करते हैं तो एक दो दोस्त को आदत होती है एक दो पैक लगाने की, बाकी लोग को भी आदत नहीं होती उनकी, तो उनको फैसिलिटेट करते, कोई फैसिलिटेट, अरे लेना कुछ नहीं होता ले, एक लेना इतने से क्या होने वाला है ले, फैसिलिटेशन है, ठीक है। सो फैसिलिटेटेड डिफिशन मतलब क्या है, सो कैरियर मेडिएटेड सिस्टम दैट ऑपरेट्स डाउन हिल ट्रांसपोर्ट डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बोला है मैंने। फैसिलिटेटेड डिफिशन मेम्ब्रेन है आपका, यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन, मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज अ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन, ठीक है। यहाँ क्या टर्म है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अभी ये फैसिलिटेट कौन कर रहा है सर, वहाँ पे भी एक दोस्त रहता है वो बोलता नहीं नहीं कुछ नहीं होता ले ले 30 ml तो लेना है ले, यहाँ पे कौन फैसिलिटेट करता है, यहाँ पे फैसिलिटेट करता है मीन्स और कैरियर करता है फैसिलिटेट। सो इट इज अ कैरियर मेडिएटेड सिस्टम। कैरियर क्या करेगा, इज अ प्रोटीन प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन, प्रोटीन होता है जो सेल मेम्ब्रेन में है, सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे कुछ होंगे ऐसे, ये क्या करते हैं प्रोटीन्स, यहाँ पे विटामिन B12 है, अपने आपके डाइट में आया है विटामिन B12, सो दिस विटामिन B12 इज अब्सॉर्ब्ड बाय दिस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, सो फॉर दैट यू नीड अ कैरियर। ये जो कैरियर होता है इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर, क्या बोलते हैं इसको इंट्रिंसिक फैक्टर। सो एब्सॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 वाया इंट्रिंसिक फैक्टर, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है GPAT 21 में, इसके ऊपर GPAT में पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। फॉर द एब्सॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 you need an intrinsic factor which is a glycoprotein known as a GP glycoprotein, और GPAT 21 में आज इस क्वेश्चन था GP21 GP glycoprotein is a factor which is responsible for the which is required for the absorption of following, नीचे ऑप्शन में विटामिन B12। so for the absorption of vitamin B12 you need a glycoprotein और कैरियर, glycoprotein और कैरियर कौन सा है
इसको इंट्रिंसिक फैक्टर भी बोलते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर और ग्लाइकोप्रोटीन. ओके, so this will combine with the B12 and it will take B12 across the cell membrane and that is known as facilitated diffusion. अकेले जाने में डर लगता है, साथ चाहिए. साथ कौन देता है? कैरियर. कौन सा कैरियर? हर एक का अलग अलग होता है ना. मेरा दोस्त अलग है, तुम्हारा दोस्त अलग है. वो जैसे विटामिन B12 का दोस्त होता है इंट्रिंसिक फैक्टर, तो उसको गले में हाथ डाल के फिर डरना मत, टेंशन मत ले, मैं हूं ना, ऑल इज वेल, वो ये लेके करेगा मेम्ब्रेन. लाइकवाइज दैट ग्लूकोज का भी entry of glucose in the RBC it is also done by glucose transporters known as the carriers. So likewise, okay, ये ऐसे दोस्त होते हैं. Facilitated diffusion मतलब क्या? It is a carrier mediated transport system which operates downhill. तो ये भी क्या है? डाउनहिल है. यहाँ पे भी एनर्जी नहीं लगनी. एंड इसके ऊपर जीपैट में क्वेश्चन आ चुका है. Now you can see the difference between simple diffusion and facilitated diffusion. Simple diffusion is without any हेल्पर प्रोटीन, विदाउट एनी. यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है. ओके, डिफ्यूजन पार्टिकल ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, इट विल बी डिफ्यूज्ड अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन वेयर देयर इज लेस कॉन्सेंट्रेशन नोन एज डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन ड्यू टू डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन नोन एज द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. दिस प्रोसेस नोन एज अ डाउनहिल प्रोसेस. नाउ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन अगेन इट इज अ डाउनहिल प्रोसेस, बट ओनली डिफरेंस इज दैट हियर कैरियर प्रोटीन इज देयर, हेल्पर प्रोटीन इज देयर. पार्टिकल्स, डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स, ये जो हेल्पर प्रोटीन है, ये हेल्पर प्रोटीन, इट विल कंबाइन विद दैट एंड इट विल ट्रांसपोर्ट देन डाउनहिल. ये चैनल, प्रोटीन चैनल के थ्रू, जैसे पोर ट्रांसपोर्ट जो है वो एक पोर ट्रांसपोर्ट का ये. अभी कैरियर प्रोटीन जो रहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, बोथ प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, both process does not require energy. Now next we'll see carrier mediated transport or active transport. So specialized transport mechanism for molecules, vitamins, monosaccharides, amino acids. ये absorption, विटामिन के absorption के लिए या फिर शुगर के absorption के लिए या फिर अमीनो एसिड के absorption के लिए आपके intestine में स्पेशल प्रोटीन होते हैं known as a carrier protein. A membrane protein known as a carrier binds with reversibly with non-covalently with the drug or complex like vitamin. Complex transported across the cell membrane and dissociated by releasing the carrier molecule again. Carrier will be returned to its original places. Carrier has always non-polar outer. Location of such carrier particular anatomical space. ऐसे कैरियर जो है जैसे विटामिन B12 के लिए कौन सा कैरियर लगता है? इंट्रिंसिक फैक्टर है ना. ऐसा मोनोसैकेराइड के लिए, अमीनो एसिड के लिए अलग रहेगा. सो आपका ये पूरा मान लीजिए कि आपका इंटेस्टाइन है. लोकेशन ऑफ सच कैरियर प्रोटीन, एक जगह पे लोकेटेड रहेंगे ऐसा एक. लोकेशन ऑफ सच कैरियर प्रोटीन व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द एब्सॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स एंड विटामिन्स. एक जगह पे ये ऐसे प्रोटीन बहुत ज्यादा रहते हैं, ठीक है, और जहाँ पे ये प्रोटीन ज्यादा है वहां से एब्सॉर्प्शन क्या होगा? ज्यादा होगा. So location of such a carrier mediated protein at a particular anatomical space of your GIT known as a absorption window. Absorption window. It was a question again in GP. ऐसे ऐसे चीज पढ़ाऊंगा मैं आपको, न पढ़ाया होगा किसी ने, बोला होगा. What is absorption window? Location of carriers, location of carrier or location of carrier proteins at a particular anatomical space of your GIT. Where from here there is a absorption of drugs and chemicals known as absorption window. Now they are structure specific. These carriers are structure specific, मतलब हर एक का ये अलग carrier रहेगा. And their kinetics are discussed by mixed autokinetics known as Vitali's maintained equation and saturation or non-linear kinetics. For example, for B complex vitamins, bioavailability of drugs absorbed by such system. इसके लिए कैरियर रहता है, उसका बायोअवेलेबिलिटी, डोज बढ़ाए आपने तो भी बढ़ता नहीं है. फॉर एग्जांपल बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स अब्सॉर्ब बाय सच मैकेनिज्म डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग द डोज. जितना डोज इंक्रीज करेंगे उतना बायोअवेलेबिलिटी उसका डिक्रीज होगा. क्यों? क्योंकि कैरियर क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं. these carrier proteins are limited in nature. Location of such carrier system. Location of such carrier system in the GIT, it is known as the absorption window. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है जी. Location of such carrier system is known as the absorption window. Method of absorption. Last process of absorption known as a last नहीं, second last.
So active transport requires energy. In the active transport, you have different type of transport like direct ATP required or ion transports और ABC ATP binding cascade. So इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन आया था ABC ATP binding cascade जो है it is a type of active transport responsible for the transportation of foreign molecules or toxins into the cell. सेल के अंदर लेके जाने के लिए ये ABC ATP binding cascade ट्रांसपोर्टर्स रहते हैं. ये क्या करते हैं कि जब एंटी कैंसर ड्रग जो साइटोटॉक्सिक ड्रग एंटी कैंसर ड्रग कैंसर सेल को मारने वाले जो ड्रग्स रहते हैं वो सेल के अंदर तो भी जाना चाहिए ना पहले उसमें. तो सेल के अंदर जाइए तभी मारेंगे ना. लेकिन बट ये एटीपी बाइंडिंग कैसे क्या करता है सेल के अंदर गया कि बाहर कर देता है गया कि बाहर कर देता है. एटीपी बाइंडिंग कैस्केड और एबीसी ट्रांसपोर्टर दे आर द very important reason for the pumping out the anti-cancer drug which will there is a resistance of anti-cancer drug is because of this ABC and ATP binding cascade. And our question we say that one of the following mechanism is responsible for the resistance of anti-cancer drugs that is a ABC binding cascade. Now secondary active transport होता है एक होता है primary active transport इसमें आपको एनर्जी डायरेक्टली लग जाता है से तीनों. सेकेंडरी there is no direct requirement of AP. इसमें होगा इसमें टाइप्स होता है सिम्पोर्ट एंटीपोर्ट. सिम्पोर्ट मतलब मूवमेंट ऑफ ड्रग इन वन मॉलिक्यूल ओनली. ठीक है जैसे ग्लूकोज सोडियम ट्रांसपोर्ट सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट जैसे ये सिम्पोर्ट यहाँ से ग्लूकोज को लेके अंदर डाल देंगे ग्लूकोज एंड सोडियम साथ में अंदर जाएंगे. एंटीपोर्ट क्या होता है काउंटर ट्रांसपोर्ट आल्सो नोन एज काउंटर ट्रांसपोर्ट. तो एक को अंदर छोड़ेगा दूसरे को बाहर लेंगे. एंटीपोर्ट एक को अंदर छोड़ेगा उसको बाहर लेंगे. मूवमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज पंप इन द किडनी. तो ये क्या करेगा सोडियम को अंदर लेगा हाइड्रोजन को बाहर फेंक देगा. सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज पंप. लास्ट वन इज नथिंग मतलब वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट. वेसिकुलर मतलब क्या है वेसिकुलर मतलब सेलुलर ट्रांसपोर्ट. ये सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट रहेगा सेल को वेसिकुलर सेलुलर ट्रांसपोर्ट. उसमें आता है पिनोसाइटोसिस फर्स्ट इज पिनोसाइटोसिस सेकंड इज फैगोसाइटोसिस. पिनोसाइटोसिस इज नोन एज सेल ईटिंग सेल ईटिंग. तो ईटिंग किसका होगा लिक्विड का होगा या सॉलिड का. तो ऑब्वियसली आप सॉलिड ही खा सकते हो. लिक्विड होगा तो आप पी लोगे उसको. पिनोसाइटोसिस मतलब क्या सेल ड्रिंकिंग. ड्रिंकिंग इस कर सकते हैं आप लिक्विड जो है. सो इट इज मोस्टली एप्लीकेबल लिक्विड्स. ओके सो यू कैन सी पिनोसाइटोसिस. सो इनटेक ऑफ फ्लूइड्स बाय सेल टेक्स फ्लूइड्स एंड सॉलिड इट इज नोन एज सेल ड्रिंकिंग और पिनोसाइटोसिस. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. फैगोसाइटोसिस फैगोसाइटोसिस मतलब सेल ईटिंग. ये सेल खाएगा. अभी खाने के लिए क्या है सॉलिड चाहिए कुछ ना कुछ तो ऐसा घास फूस क्या खाएंगे. फैगोसाइटोसिस मीन्स ईटिंग ऑफ बैक्टीरिया. फैगोसाइटोसिस मीन्स engulfment of solid particles engulfment of solid cell of bacteria by neutrophils known as a phagocytosis. For example engulfing of solid particle by cell that is a phagocytosis. And now we'll see the again overview of this absorption. So facility जो simple difference है movement of drug across the membrane along with the concentration gradient. Facility diffusion में भी same बस only यहाँ पे carrier लगेगा. So movement of drug from higher concentration to lower concentration with the help of carrier protein known as a facilitated diffusion. Now active transport means movement of a drug from lower concentration to the higher concentration with the help of carrier mediated protein which requires energy known as the active transport. You can see again same thing. So diffusion passive diffusion. Oxygen is diffused across the cell membrane because of the difference in the concentration between यहाँ पे ज़्यादा concentration है यहाँ पे कम है. So diffusion passive diffusion. this is the facilitated diffusion passive diffusion. ये हुआ है आपका passive diffusion. second one is nothing but the pore transport. second one क्या है pore transport. So protein channel pores this is a pore transport from higher to lower due to hydrostatic pressure. तीसरा होता है आपका facilitated diffusion with the carrier protein again the with the concentration gradient down in the process. Okay. Now active transport जो है that requires energy that is a uphill process known as the uphill process. Movement of drug from lower concentration to higher concentration which requires energy. So that's why it is known as a active transport. जहाँ पे भी carrier रहेगा so those absorption process where there is a carrier involvement. जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है carrier लगने वाला है यहाँ पे क्या है carrier लगने वाला है protein carrier. So these processes are saturable.
जहाँ पे भी कैरियर आएगा दोज प्रोसेस आर द सैचुरेबल, जहाँ पे कैरियर नहीं है वो नॉट सैचुरेबल, बिकॉज कैरियर्स आर लिमिटेड इन नेचर, वो कैरियर्स बहुत ही कम होते हैं। जैसे आपने डोज भी बढ़ा दिया ड्रग का, जैसे अपने पास मान लीजिए 5 कैरियर है इंटेस्टाइन में, और आपने क्या किया 10 मॉलिक्यूल्स आपकी इंटेस्टाइन में, तो 10 मॉलिक्यूल क्या क्या फर्क पड़ता है, वो कैरियर कितने हैं 5, वो 5 ही मॉलिक्यूल लेके जाएंगे। सो दैट्स व्हाई इट इज